NOAA works with NASA to design, develop, and deploy space weather operational satellites to safeguard our society. And what's NASA's role? So NASA is a partner with NOAA, and we focus on the science and make sure that we're understanding our star and can do better and better predictions. So scientists use models and the data from all of these satellites in order to better understand space weather. And what are some of the biggest mysteries around space weather? What don't we know about it? Oh, there's so much. I mean, let's start at the sun, right? That's the focus today. Even how to predict flares long term, or those large coronal mass ejections, those billions of tons of material that come off. We don't quite know how to predict them for a long term yet. Well, I'm so glad we have two agencies on the case. Thank you both, Ilse and Kelly. Thank you both for joining us. So, did you know that space weather is also affected by solar eclipses? One citizen science project does experiments during the annular solar eclipse and the total solar eclipse. So, let's learn more about that project. When the moon blocks the sun during a solar eclipse, there is a noticeable impact on Earth's upper atmosphere, known as the ionosphere. These changes can affect radio communications, including amateur radio, also known as ham radio. Ham radio is a way you can talk to people all around the world. You set up a radio and antenna. You talk into the radio sends a signal up to the antenna sends the signal up to the sky. It bounces off of the electrified layer of the sky back down to Earth, where you can talk to the person on the other side. During the 2023 annular eclipse and the 2024 total eclipse, the HAM-SCI Citizen Science Project is inviting ham radio operators to transmit radio signals. The goal is to have people make as many radio contacts as they can with operators in different locations during these celestial events. By recording how strong their radio signals are and how far they go, ham radio operators and scientists can learn about how the ionosphere changes during solar eclipses. Sometimes you can talk around the world, and sometimes you can't. And that's all based on what the ionosphere is doing, what the sun is doing. When it works, when you are able to talk to these faraway places, I find that really magical. To learn how you can participate, follow Do NASA Science on X and Facebook. There are currently ham-SCI experiments happening right now across the country, and there'll be more during the total solar eclipse on April 8th, 2024. If you want to learn how to participate, go to hamsci.org. So next, we're thrilled to be joined with the acting director of NASA's Heliophysics Division, Peg Luce. Peg, thank you so much for joining us. Oh, it's such a pleasure. So how are you feeling about the annular eclipse today? Wow, it's happening, and we've been looking forward to this for so long. These are a rare celestial event that people can actually experience the effects of, so it's really exciting. I'm so excited. I am too. So we've been chatting about the sun all morning. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बढ़िया है शाउट एस्ट्रो। हेलो एवरीवन, मोइनाक देवनाथ भाई, हेलो सब लोग कैसे हो? यहाँ पर आप लोग अभी देख पा रहे होंगे ये सोलर एक्लिप्स लाइव, जो कि नासा से मैं दिखा रहा हूँ। नासा का लाइव स्ट्रीम है ये, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल क्योंकि ये हो रहा है यूएसए में, तो अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, बट मैं यहाँ से आपको जितना हो सकता है दिखा दे रहा हूँ। नासा से मैंने डायरेक्ट लाइव लिया है, ठीक है। अरे एस्ट्रो आर्यन सो मैं नासा से डायरेक्ट दिखा रहा हूँ ये, तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए इस स्ट्रीम को। And exciting field of study. I love that the sun touches everything at NASA. So how does NASA touch everything we have here on Earth? So I like to take this opportunity to
remind people about NASA science. So when most people, when they think of NASA, they think of astronauts and human spaceflight, which is, of course, so exciting. But NASA science is rewriting the textbooks all the time. We have so many discoveries, and just so much. We have a Parker Solar Probe that is flying through the corona of the sun. We have the Voyagers that are outside the heliosphere. We have so much to learn that I could never even begin to talk about it. But I want to invite people to go to NASA at Home and check. खैर फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्लिप्स है वो पार्शियल फेज से थोड़ा आगे बढ़ चुका है और अब टोटल लिंक होने वाला है, मतलब टोटल रिंग बनने वाला है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ी हेल्थ नहीं सही है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मेरी आवाज़ सुनने में, लेकिन ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे ये अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अलग अलग लोकेशन से बाकी एंकरिंग ये लोग कर ही रही हैं। और इधर लेफ्ट साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे सोलर एक्लिप्स को लाइव दिखाया जा रहा है, वो उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो पूरी एनुलैरिटी है इसका पूरा काउंटडाउन चल रहा है। ऊपर 32 मिनट के बाद आपको टोटल सोलर एक्लिप्स जितना भी हो सकता है उतना देखने को मिलेगा, जितना लास्ट जाएगा उतना। From our friends at Time and Date. Wow. Look at that. San Diego. Oh, San Diego. We've got a live view of San Diego, California right now. What a beautiful partial eclipse. Yeah. I mean, the sun, it's a crescent. Normally we refer to the moon as a crescent moon, but this time it's the sun. And I mean, normally we see, you know, the sun in the sky, the moon in the sky. Occasionally they might be together, but to see them overlapping, it really reminds you that we're a part of this just entire system. I know. And so interplaying together. हाँ, ये नासा से लाइव है, तो अभी नासा ने ही लाइव किया और टाइम एंड डेट भी ये दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं लोगो है टाइम एंड डेट से नासा ने लिया है और अभी नासा की कोर्टेसी है ये वीडियो की, तो ये नासा से ही लाइव आपको दिखाया जा रहा है। James, what's the latest? Yeah, hate to hear us. So we मुझे खुशी है मोइनाक भाई, आपको अच्छा लगा देवनाथ जी। Oregon, they should have a phenomenal view there, and just a reminder to all of our भाई थोड़ी हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। moment that's going to last for just a couple minutes, so really take advantage of that big moment. You just saw that view in San Diego. Even if you're outside of this area, you might still have a beautiful view of a partial eclipse. And if I zoom in onto our little area of annularity, you'll notice kind of a couple little bumps and things here, which you might initially think is because it's low resolution, maybe it's a little bit, you know, low res here, but the inverse is actually true. We actually have an incredible amount of data feeding into our Eclipse Explorer to generate the images and the predictions that you're seeing on your screen. This tool takes into account two unique things. One is obviously the topography of Earth, so mountains, river valleys, all kinds of little divots and things as that shadow moves across the land. But also, and really interestingly, it takes into account the shape of the moon. When you think of the moon, you might just think it's perfectly circular, but there are so many. नहीं भाई, नासा से कांटेक्ट थोड़ी ना है, ये तो लाइव आप दिखा सकते हो, मतलब अपने चैनल पे लाइव दिखाया जा सकता है। नासा क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन देता है। देवनाथ जी, मेरी आईडी है एस्ट्रोगेजर ऑफिशियल, आप लोग इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। One that's really just using so much data to feed into this. And again, even if you're outside of this area, I encourage you to use our tool to kind of predict what you're going to see. So if I scroll all the way over to the East Coast and I zoom all the way out here, you can just see just how large this area of partial eclipse is. This kind of outer circle that you see here is areas that might be having a partial eclipse. So if I click on, for example, Philadelphia, I know quite a few people watching there. It looks like it might be a little bit rainy, but if the sky clears up for you, you'll have a peak coverage for your partial eclipse at around 1:21 local time. So still plenty of time for you to get your glasses ready in order, get your pinhole projectors created. You had that instructions earlier. ओके भाई, ज़रूर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
और ये स्ट्रीम लाइव चलेगी लगातार, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ये लाइव स्ट्रीम लगातार चलेगी जब तक ये सोलर एक्लिप्स ख़त्म नहीं हो जाएगा। भाई यहाँ पे अभी 2027 तक देखना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इंडिया में नहीं है, यूएसए में देखने को मिलेगा आपको। in annularity, and this is continuing to move. यहाँ आपको लूनर एक्लिप्स देखने को मिल सकता है। लूनर एक्लिप्स अभी होने वाला है, इसी मंथ में है। एस्ट्रो आयन क्या हो गया भाई? और आप लोगों को जो भी मतलब क्वेश्चंस है आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जिस लोकेशन से भी लाइव दिखाया जा रहा है, अब वहाँ पे 27 मिनट बचे हैं एनुअलिटी के लिए। मतलब एनुअल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा अभी थोड़ी देर में ही 27 मिनट्स में आपको। और हमारी जो न्यू वीडियो है वो जल्दी ही आने वाली है, सो उसका आप लोग वेट करिए थोड़ा सा, क्योंकि जो न्यू वीडियो है वो बस प्रोग्रेस में है। अभी मैंने बनाना शुरू कर दिया है उसको, और वो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी। कल उसका टीजर भी लॉन्च होने वाला है। Total eclipse in Nebraska. I drove 1,200 miles for a little over 2 minutes, and it was well worth it. And just couldn't believe the experience of the eclipse. हेलो एवरीवन, जो भी है अभी यहाँ पे लाइव देख रहा है वो क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे। हेलो मंगेश, हेलो एवरीवन, जो भी है अभी यहाँ पे देख रहा है, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो मुझसे पूछ सकता है। In my backyard is just, it's indescribable. As you can see, the town is alive, preparing for these spectacular moments. Now, Gina, the sun not only impacts us here on अभी फ़िलहाल आप लोग स्ट्रीम एंजॉय करिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग स्ट्रीम एंजॉय करिए और देखते हैं कि आपको जो भी मतलब क्वेश्चन होगा वो, अगर आपको दिक्कत होगा उसमें तो मैं आपको समझा दूंगा।
in the solar system, which I thought was really cool. So let's take a second and see how studying heliophysics is actually helping us prepare for sending humans to the moon and Mars under our Artemis program. NASA has studied the sun and its influence throughout our solar system for decades. The Artemis program will provide a better understanding of solar activity through 2 new missions. Hermes is an instrument package that will monitor space weather from the moon and be placed on NASA's Gateway, an orbital outpost being built for lunar operations and eventually Mars exploration. The dual spacecraft Escapade mission will examine the effects of solar wind on the red planet's atmosphere. Heliophysicists at NASA are working to protect astronauts who will travel to the moon and to Mars by increasing our understanding of the space environment through which they must travel. With safety ever at the forefront, the agency is using spacecraft observations and simulations to better understand space weather. That's a look at your Artemis Moon Minute. Folks, I've learned that it is almost time for Annularity to make its move into Albuquerque, New Mexico. We've got Joy standing by at our other desk who is going to tell us about an upcoming NASA mission and show us live views from this solar eclipse. Joy, Michael, on a scale of 1 to 10, how excited are you right now? I think I'm about a 20 right now. What about you, Michael? Oh, I am so excited. You can see the light changing. It's getting a little bit chilly. I am so excited. I cannot wait. Yeah. So now we're joined with NASA scientist Dr. Nikki Weil, who's going to tell us about a new sun mission. Firstly, Nikki, how are you feeling today? It is so amazing to be here. I'm so excited to be able to be a part of this festival and witness the annular eclipse. So Nikki, what is the PUNCH mission and what does it stand for? So PUNCH is a NASA Small Explorer. It stands for Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere. So the corona is the outermost atmosphere of the sun. It's the part of the sun that you get to see during a total solar eclipse when the moon totally blocks out the main body of the sun. And then the heliosphere is the bubble carved out by the sun. एस्ट्रो आयान, आप लोग टेंशन मत लीजिए क्योंकि व्यूज़ देखिए होते हैं, ये प्रॉब्लम आती है जनरली, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। शुरुआत में ये प्रॉब्लम आती है, फिर धीरे धीरे ये ठीक हो जाती है। तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। अभी मैं देखता हूँ, जो भी हो सकता है मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा ठीक है देवनाथ भाई, मैं देख लूँगा। एस्ट्रो टेलीस्कोप, ठीक है, मैं देख लूँगा आपका। Coming up. PUNCH is going to be so amazing because it's going to take images of the corona and that plasma as it fills the solar system in regular white light, like we could see it with our eye if our eye were sensitive enough and if the moon always blocked out the main body of the sun. But it doesn't, and that's why we need NASA missions like PUNCH to do that for us. Fantastic. I can't wait for the mission to launch. Me neither. I'm super excited about it.
So we're like we're moments away, minutes away from the annular eclipse here. Nikki, thank you so much for joining us. I hope you enjoy the annular eclipse. Yeah, thank you so much. This has been great. And I hope you keep safe from the wind. The wind has kind of picked up right now. So yes, so the skies are clear, the wind has picked up, but we have a clear view of the annular eclipse. So remember, the annular eclipse is moments away from Albuquerque and the sun is never completely covered. So during the eclipse, you have to keep your eclipse glasses on the entire time. You can also use other indirect viewing methods too, like a pinhole projector if you don't have eclipse glasses. So Michael, do you have your glasses ready? I have mine ready. Great. So now let's go to a full screen view of the telescope here in Albuquerque. Wow. Wow. We are minutes away and you can see that the ring of fire is almost here. Yeah, the sun is just egressing over into the moon, or the moon's egressing onto the sun. We're getting closer and closer. The light here on the ground is visibly different, and looking up at the sky, where we see a thumbnail moon. It is, or thumbnail sun. It is gorgeous. Wow. The ring of fire, the almost ring of fire, it looks so sharp and clear with our beautiful skies today. Yeah, it really is almost that Johnny Cash moment. We're getting close to the ring of fire. It is really beautiful to see happening in real time as well. This is one of those events where I can sit and watch and see how the moon is progressing and see that changing. I can't believe that the moon, we can actually see the moon moving in front of the sun right now. You can literally see it. It's just incredible. So as we approach annularity, you might be able to see Bailey's beads. These are bright points of light of the sunlight coming through the valleys on the moon itself, right before the annularity begins. You can even hear the crowds in the background. You can just feel the atmosphere building up. Yeah, it is palpable. Everybody is super excited here. I know I am just thrilled. We are just in the final countdown. You can hear some people starting to cheer and starting to get all pumped up themselves. Wow, the ring of fire is almost here. I'm just going to take my glasses off briefly and you can see the crowd, everyone is just staring safely at the sun right now. It's just amazing that we're all united looking at this amazing celestial event. And make sure you take a look at the shadows around you. You're going to see these crescent shadows everywhere as different objects create natural pinhole projectors. And so make sure that you do have a moment to take a look at the world around you, because there's a beautiful rings. So let's take a minute and just be quiet and enjoy the view. बस फुल रिंग होने वाली है, रिंग ऑफ फायर बनने ही वाली है, थोड़ा सा और रह गया है। देखिए आप लोग मूवमेंट देख सकते हैं, कितनी तेज सन मूव करता है। और यहाँ पर आप लोग लाइव वीडियो में देख पा रहे होंगे, लगातार मून मूव कर रहा है सन के ऊपर। मैंने अभी सन बोल दिया था, मतलब मून मूव करता है बहुत तेजी से, और आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा मूव कर गया और सन के ऊपर रिंग ऑफ फायर बना लिया है। काफी अमेजिंग व्यू लग रहा है। काश हम लोग यहाँ पर इसको कैप्चर कर पाते हैं इंडिया में, तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इंडिया में नहीं हम लोग कैप्चर कर सकते। लेकिन यूएसए से लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको नासा के थ्रू, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। काफ़ी अमेजिंग व्यू है ये। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं इस वीडियो की। वैसे मैं कुछ पिक्चर्स शेयर ज़रूर करूँगा किसी और से लेकर के, उनको क्रेडिट दे करके मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा। तो जो भी है मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग आ सकते हैं, @astrogazerofficial करके मेरी आईडी है, उस पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। Phenomenon that I just feel so lucky to be here at this place at this time to be able to observe it. Wow, I'm just looking at a tiny pinhole below and I see a little ring, like a little spotlight. This is so cool. You can see ringlets dotting everywhere around here. See people taking pictures of the ground. How are you feeling, Michael? Oh,
This is spectacular. You know, we've been preparing for this event for so long. To actually be in this moment and to be experiencing it live is just tremendous. Joy, how are you feeling? I'm just in awe. You know, I can feel the temperature drop, and this ring of fire feels so long. It's just about 4 minutes long, and it feels just incredible that we are seeing moon right in front of the sun right now. So that moon's shadow is traversing across the ground at a few thousand miles an hour, almost Mach 3. So even though it seems like it's lingering, it's actually making really good progress. And pretty soon our colleagues in Kerrville will be seeing annularity too. Wow, and the crowd, everyone is still. So लगातार अभी आप लोग देख रहे होंगे रिंग ऑफ फायर बन रहा है और ये देख पा रहे होंगे। हाँ भाई एस्ट्रोआयन कुछ कह रहे हो आप? And then everything got a little bit quieter as people took in the site. I think that, you know, as people experience this event, it strikes both, you know, personal but also communal, and it's a really beautiful, beautiful event to see. I would say we have about thousands of people in the fiesta today and hundreds on the museum grounds. Everyone is just excited about this eclipse, and it's just so lovely to see. I think also what I really love to do is to look at the crowd and see everybody looking up at the sky with their glasses on in the same place. It's fun to do a little bit of people watching as well. Yes. Wow, this is a perfect ring of fire. It's just so crisp. Yeah, it's fantastic. I'm so excited for the science that is going to be coming out of this too. Of course, I always come back to the science, and this opportunity to have the moon covered to this extent is going to provide us really amazing data about how the sun and moon and Earth how they interact with each other. Oh my goodness, we have about 30 seconds left of annularity here. I just want to absorb this moment. It's so fast and so slow. Definitely. Wow, what a sight. Sometimes you just have to take a moment to take it in. Yes. Oh my goodness. Well, we have a few more seconds left of annularity in Albuquerque. Yeah, we're closing down on the last little bit. See if you can see a Bailey's bead possibly popping up right as that edge of the moon it aligns with the edge of the sun. Just seconds left. Really such a gorgeous sight. It really is. Oh, that is going to be a moment to remember. Absolutely. So Kerrville is going to be experiencing this very, very soon. So let's head back to them in Kerrville, Texas to see what they're up to. Oh, I mean, Joy and Michael, like, I got goosebumps watching you experience annularity, and Gina, like, that is about to be us soon. It's true. I mean, so Tahira, we're about 550 miles away from them, and we will have annularity in about 10 minutes because, as Michael said, the moon's shadow is traveling more than 1,000 miles an hour. Everyone's so excited. Yeah, as you can see, the crowd is just getting excited for today's opportunity. And folks, it's starting to get dimmer here. Like, it is going to be amazing. Yeah. So, Gina, other than sheer beauty, why do we observe eclipses at NASA? Well, NASA can learn a ton of different science from the eclipses. So let's talk about exoplanets for a second, because when we study exoplanets, we are actually using eclipses. The planet itself is passing in front of its host star, and so we can learn about the exoplanets. There are eclipses on other planets in our solar system that we can study, but here on Earth, the science... हेलो एस्ट्रोयन आप क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आप क्वेश्चन नहीं पूछे अभी। कह रहे हैं यहाँ पे अभी आप लोग देख पा रहे होंगे रिंग ऑफ फायर अभी ख़त्म हुई है और सन जो है वो अब मतलब नीचे साइड है, वो मून ऊपर जा रहा है। मतलब सोलर इक्लिप्स ख़त्म होने वाला है, कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा।
सो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे उसका लाइव व्यू दिख रहा है। और अभी जो टोटलिटी थी वो करीब 9 मिनट पहले शुरू हुई थी, 9 मिनट तक चल रही है। अभी यहाँ पे रिंग ऑफ फायर ख़त्म हुआ है। एस्ट्रोमेचर अभी होंगे, शायद चले गए होंगे, हो सकता हो। Daytime, but it feels like it's not. It's starting to get already very close to annularity. You can hear a lot of screams behind me now. Right now, we're actually getting the annularity in Roswell, New Mexico. They should have a phenomenal view outside right now. And I'm actually joined by a telescope operator who's been providing a phenomenal view for us all morning with her telescope. This is Kat Troche. Thank you so much for joining us today. Thank you so much for having me. This is so exciting. Yeah, it's really mind-blowing seeing it. And so you have quite the setup. Could you walk us through exactly what you have outside for us? Sure. I have a Celestron 6 SE. It's a Schmidt-Cassegrain telescope with a solar filter on the front and a DSLR camera that's streaming to YouTube. And so a Schmidt-Cassegrain telescope is a bit of a unique telescope. Usually you think of kind of like a long cylindrical thing, but this concentrates the image in a different way, right? Right. So it's a little bit more compact. It's definitely designed for astrophotography in mind. And how it works is डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है अभी। ओरियन नेबुला का जो वीडियो बनाया था, आप उसको जा कर के देखोगे तो उसमें मैंने विजुअली सब चीज़ें समझाई हैं कि कैसे आप कैप्चर कर सकते हो ओरियन नेबुला को। मतलब ओरियन नेबुला तो आराम से कैप्चर हो जाएगा, किसी भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट को आप कैप्चर कर सकते हो कैसे, वो मैंने आपको वीडियो में बताया। तो एक बार आप जाके वीडियो देखो, वीडियो में सब कुछ अच्छे से मैंने बता दिया है। हो सकता है आपके फाइंडर स्कोप में कुछ प्रॉब्लम हो। एक बार आप चेक करना अपना टेलीस्कोप भी, और मेरा वीडियो देखना ओरियन नेबुला का, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है। Quite a quick event here. So how do you keep it in the field of view of the camera? well, thankfully, the remote control that's part of the telescope actually has a city database set up, so I can program it for city and state, and Kerrville was actually listed. Look at that. Very awesome. And yes, so you can see it's already moving very quickly towards us. This is where annularity is going to be currently taking place. You can see we're next in line here, coming up in just a little bit. So very excited to continue tracking this across our skies. Thank you so much for providing this awesome view for us all morning. You can really see it's really getting close now. It's got this beautiful crescent to it. Usually we're used to a crescent moon. We've got a crescent sun today. I mean, really awesome. And in just a few moments, we're going to have the ring of fire of annularity. Very excited to have that. Thank you so much for joining us, Kat. Thank you. And back to you, Tahira. Thanks, James and Kat. Now, we have हाँ, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखो अमेचर के पास जो टेलीस्कोप है उसमें भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी हो ये प्रॉब्लम। मेरे टेलीस्कोप का कॉस्ट है 7,500, आपको देखने को मिलेगा 7,500 में। यहाँ पे देखिए ये लोकेशन है, जिस लोकेशन पे अभी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे लाइव उसका, इसकी जो टोटलिटी है अभी हुई नहीं है इस लोकेशन पे। यहाँ पर अब आप लोग को देखने को मिलेगी, लोग देख सकते हैं, आप लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर भी टोटल सोलर इक्लिप्स होने वाला है। एस्ट्रो गेजर भाई का टेलीस्कोप कॉस्ट कितना है? 7,500। यस, आप लोग आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। some of the sun's activity, and basically these sunspots are where that activity can come from. And right now, the sun is in the part of its solar cycle where more of those sunspots start to appear. So the sun goes through an 11. हेलो स्टार टाइटन भाई, एक दिन लाइव करेंगे तो सब कुछ दिखाएंगे, रात में आराम से स्टार्स वगैरह दिखाएंगे और काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं लाइव दिखाऊंगा। डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स को भी ट्राई करेंगे उस दिन, बट अभी वो लाइव नहीं करूंगा, मैं जल्दी ही करूंगा। तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर होइएगा उस लाइव स्ट्रीम में भी, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को दिखाने वाला हूँ। मैंने प्लान किया है कि जल्दी वो लाइव स्ट्रीम करूँगा। उसके पहले मेरा एक वीडियो आएगा यूरेनस पे, आप लोग उसको ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से यूरेनस को कैप्चर किया है और वीडियो प्रोग्रेस में है। मैंने उसका टीज़र बना लिया है जो कि कल लॉन्च हो जाएगा, तो आप लोग उस वाले टीज़र को भी ज़रूर देखना। interested to see
everything kind of calms down too. So we'll see. Gina, I have another question. This is from Baron on YouTube, who asks, does a solar eclipse have a material impact on the atmosphere? Oh, I love this question because with the eclipse, we really are trying to understand the sun-Earth connection. And so you can almost think of the eclipse as a controlled experiment. Basically, the fact that we often, experience changes in our atmosphere during the nighttime, but the eclipse is almost able to turn off and on the sun. So Even right now, we were blasted with the sun earlier, and now it's just chilly. Like it's darker. Yeah, and so it's the upper atmosphere that we're really interested in understanding, and the energy and the radiation from the sun creates what we call the ionosphere, this upper part of the atmosphere that's filled with charged particles. And so when the sun's radiation is not hitting the atmosphere, that ionosphere, it changes in its density, its temperature, and we're really trying to understand those changes, and the eclipse gives us that opportunity to really turn the sun on and off, which we can't do in any little other experiment circumstance. that honestly all of us also get to be a part of. Right? So that's really cool. It is. Thanks, Gina. So our next question is from हेलो ब्रो, मैंने टेलीस्कोप खरीदना है फॉर एस्ट्रोनॉमी। क्या सेलेस्टियल पावर सीकर अच्छा है 50AZ? हाँ बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अगर आपका बजट कितना है, आप मुझे अपना बजट बताओ तो मैं उस हिसाब से आपको अच्छा टेलीस्कोप बता सकता हूँ। वैसे सेलेस्ट्रॉन 50AZ से मेरा कुछ एक्सपीरियंस सही नहीं है, तो आप चाहो तो फोटोकार्ड 60AZ ले सकते हो, जो कि इससे थोड़ा सस्ता ही है, इसी रेंज में आपको मिल जाएगा। लेकिन वो 60 mm अपर्चर का है, मेरा 50 mm अपर्चर का है, तो आपको 60 mm वाला ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग दोनों सोलर एक्लिप्स को देख पा रहे होंगे, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं दोनों देखने में। एक टेक्सास से है और एक है कहीं और से है, जहाँ से भी है मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोनों लोकेशन से सोलर एक्लिप्स। तो स्टार्ट एटन, यू आर डूइंग वेरी नाइस एस्ट्रोफोटोग्राफी रिलेटिव टू आवर पोजीशन। भाई यूरेनस तो जुपिटर के ऊपर ही रहता है ना, नीचे रहता है भाई यूरेनस अभी फिलहाल, नीचे रहता है यूरेनस जुपिटर के। हाँ यूरेनस बहुत डिम होता है, लेकिन मैंने कैप्चर किया थोड़े एस्टिमेशंस लगा करके, मैंने उसको ढूंढा और एक रिलेटिव फ्रेम लिया जिसमें वही सेम स्टार्स दिख रहे थे जो कि यूरेनस के पास में है। तो मुझे यूरेनस भी उसमें दिख रहा था, तो मैंने उसको कैप्चर किया है। आप लोग देखना कि मैंने उसको कैसे कैप्चर किया है। थैंक यू ब्रो, बट अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा। कोई बात नहीं, स्टार्ट अटन, फिर भी हम लोग आपके साथ हैं। हाँ फोटो कार्ड्स 60AZ आप ले सकते हो। बिल्कुल देवनाथ भाई, बहुत अच्छा, आपके पास 76 mm का टेलीस्कोप है, जो कि काफ़ी अच्छा टेलीस्कोप है, तो ये बड़ी अच्छी बात है आपकी। ब्रो कहाँ से हो आप स्टेट? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम 70-80 mm लो, वरना सर्टिफाइड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन जिनका बजट थोड़ा कम है उनके हिसाब से वो 60AZ ले सकते हैं, F760 ले सकते हैं, जो कि उस बजट में काफ़ी अच्छा टेलीस्कोप है। एस्ट्रोएन मैं एस्टिमेशन नॉर्मली जैसे देखता हूँ स्टेलेरियम में कि कितनी दूर पे वो ऑब्जेक्ट है, तो मैं उतनी दूर पे अपने टेलीस्कोप को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ और ढूंढने की कोशिश करता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने ले करके अभी एक यूरेनस प्लैनेट को कैप्चर किया है। ऐसे ही मैं ढूंढ रहा था और जितने स्टार थे मैं करीब उनकी पोजीशन को ढूंढ रहा था, और जब मुझे वो पोजीशन मिल गई तो मैंने उसको कैप्चर किया। और यूरेनस, मैं डैम श्योर हूँ कि मैंने यूरेनस को ही कैप्चर किया है। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है एंगल फाइंडर से डीप स्काई ऑब्जेक्ट इजीली दिखता है। हाँ बिल्कुल, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, उससे भी इजीली आप कैप्चर कर सकते हो डीप स्काई ऑब्जेक्ट। हाँ लूनर एक्लिप्स आने वाला है, जो कि इंडिया में दिखेगा, तो मैं आपको अपने टेलीस्कोप से लाइव दिखाऊंगा। वो आप लोग उसमें ज्वाइन होना, उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। भाई आपका टेलीस्कोप कितने mm का है? मेरा टेलीस्कोप है 50 mm का। एस्ट्रोन मैं 7 में हूँ। अच्छा हाँ, तो आप चाहो तो एस्ट्रो अभिनव से बात कर सकते हो। एस्ट्रो अभिनव भी 7 में ही है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी एस्ट्रो फोटोग्राफी करता है और उसके पास भी F760 टेलीस्कोप है।
उसने भी वही सेम लिया है जो कि मैं देवनाथ भाई को बता रहा था। देवनाथ को कि किसको, मैं किसी को तो सजेस्ट कर रहा था, अच्छा हाँ, हरमन को सजेस्ट कर रहा था ना मैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि F760 6000 के बजट में काफ़ी अच्छा टेलीस्कोप है। जिसको भी लेना है वो वही ले, क्योंकि सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 50 AZ से थोड़ा सा मेरा मतलब जो सेटिस्फैक्शन है वो थोड़ा कम है। सो फिलहाल आप लोग लाइव व्यू एंजॉय करिए ये सोलर एक्लिप्स का, रिंग ऑफ फायर। Fact about our moon that's pretty incredible. It's 400 times smaller than the sun, but it's also 400 times closer to the Earth. No And way, that 400 and 400 is the 400? magic number here. Yeah, the fact that 400 and 400, that means in the sky, the moon and the sun appear to be the same size. And that is unique to us on Earth. No other planet in our solar system. ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोग इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब वो कंट्रोवर्सी भी ख़त्म हो चुकी है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे ही। Looking around, and you can just see everything. The shadows are a little bit different. It's dim. You get this hazy feeling, but the sky is still blue. That's what's strange about it. Oh, it's so sweet. We've got parents like holding little eclipse glasses on their kids to look up. This is just, it's really amazing how just like, I don't know, a natural phenomenon can really make the world pause for a second. Great. हाँ बिल्कुल, अमेज़ॉन पे आपको वो टेलीस्कोप देखने को मिल जाएगा। और हाँ काकू भाई, आप स्टार्ट कर सकते हो अपना एक चैनल, एस्ट्रो फोटोग्राफी का चैनल आप भी स्टार्ट करो, और आप देख सकते हो हरमन भाई, नेबुलास भी दिखते हैं और प्लैनेट्स भी दिखते हैं, बट उतने ज़्यादा नेबुला आप नहीं देख पाओगे। On several factors. I mean, each eclipse is unique, and so one thing has to do with where in the moon's orbit the moon is, because the moon's orbit isn't circular, so it will go faster and slower at different parts, and that will make the shadow travel at different speeds. Also, where the shadow is landing on Earth will have an impact, because if you're at the equator, you're going to be rotating much faster than if you were at the poles, and so for that fact, it changes the length of that maximum eclipse too. And that's true not just for annular eclipses, but for the partial eclipses, for the totality, for total solar eclipses as well. And I imagine, you know, our folks at home getting some of those partial eclipses are also having a great experience too. Wow. I don't know what I expected, but it wasn't this. Like, this is incredible. इमेज को मोबाइल में प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल है भाई, सो उसके लिए अभी फ़िलहाल मैं कुछ आपको बता नहीं सकता, बट हाँ अगर मुझे कुछ पता चलता है इस बारे में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करूंगा। भाई कैसे बात करें, किससे बात करनी है भाई आपको? भाई क्या 130 mm के टेलीस्कोप से मार्स दिखेगा? हाँ बिल्कुल दिखेगा भाई, बहुत अच्छे से दिख जाएगा आपको मार्स। And so, in addition to that, I mean, we really want to understand how those sunspots, what's going on when they're covered versus when they are. फ़िलहाल अभी आपको मेरी वॉइस थोड़ी अजीब लग रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा अभी अनवेल हूँ हेल्थ से, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी बोलने में। लेकिन आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर मैं ज़रूर करूँगा, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ थोड़ी हेल्थ से मेरी प्रॉब्लम है, इस वजह से प्रॉब्लम है। तो लैपटॉप से हो जाएगी, हाँ बिल्कुल लैपटॉप से तो हो जाएगी, आपकी जो स्टैकिंग होती है, स्टैकिंग या प्रोसेसिंग वगैरह हो जाएगी वो। The shadows are all like little rings as well. It's just a beautiful sight. Kind of hard to put into words the exact feeling. I mean, we've been preparing for this for a while. We've, you know, been tracking this all morning with our Eclipse Explorer, but actually to see it in person and to take it in, it's a really incredible moment. And this only lasted about 4 minutes. You can see on our Eclipse Explorer, this is already passing off of Kerrville, heading further southeast to parts of the Texas coast on the Gulf. And the morning is far from over. हाँ अभी एक्लिप्स चल रहा है, यूएसए में हो रहा है, इस वजह से एक्लिप्स अभी चल रहा है। और अभी आप लोग लाइव देख पा रहे होंगे जिस भी लोकेशन से ये दिखाया जा रहा है, मुझे इसका मतलब नाम पता नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे लिखा है केरविल करके।
तो यहीं पे अभी लाइव आपको यहाँ का दिखाया जा रहा है सोलर एक्लिप्स, जो कि अभी टोटलिटी से अभी ख़त्म हुआ है और रिंग ऑफ फायर अब ख़त्म हो चुकी है। तो मे बी कुछ देर में सोलर एक्लिप्स एंड हो जाएगा। सोलर फ़िल्टर अभी फ़िलहाल मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया था सोलर फ़िल्टर को बनाने का। मैंने एक्सरे शीट को लेकर के उससे सोलर फ़िल्टर बनाने की कोशिश की थी, जो कि मैंने आपको अपने सन वाले वीडियो में दिखाई है। मैंने सन स्पॉट्स भी उससे कैप्चर किए, तो एक बार आप जाके देखना। थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा उससे सही नहीं था क्योंकि उतनी क्लियर इमेज नहीं बन रही थी। तो एक बार आप जा करके मेरी सन वाली वीडियो ज़रूर देखना। Starts NASA's Heliophysics Big Year, which is a year where we're encouraging people to do as many sun-related activities as possible in the lead up to next year's total solar eclipse. Now, Joy and Michael in Albuquerque are going to share some of the ways you can play a part. Joy, what can we look forward to? Now that the annular eclipse is here, the fun has just begun. So today is the official launch of NASA's Heliophysics Big Year. This is a year-long celebration of solar science, and it's modeled after the Big Year concept from citizen scientists in the bird-watching community. So they're challenged to see as many birds as they can, but in the Heliophysics Big Year, we're challenging you to do as many sun science-related activities as possible. And so one way हेलो हेलो मोइनक देवनाथ भाई, ठीक है, मैं समझ गया आपको, आप ही हो। With NASA's citizen science projects are collaborations between scientists and members of the public, no matter your citizenship. Several volunteer science projects are gearing up for the 2024 total solar eclipse that you can join. Total solar eclipses don't just look cool, they provide a rare chance to see the sun's faint outer atmosphere. Using telescopes and cameras that are safe for viewing the sun, volunteer scientists across North America will capture images of the total solar eclipse. Scientists will study these images in detail, tracking how plumes of solar material move through the sun's atmosphere. But be careful, without proper tools and techniques, you can damage your eyes and your camera. Did you know you can listen to an eclipse too? Amateur or ham radio operators will send radio messages. फ़िलहाल अभी थोड़ी पढ़ाई चल रही है, जिस वजह से मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे। बट हाँ, फिर भी मैं जितना कर सकता हूँ, मैं 2 वीक्स में एक वीडियो ज़रूर दे रहा हूँ। तो अभी वो वाला सिलसिला चल रहा है और अभी मैंने 2 वीक्स पहले वीडियो डाली थी, 2 वीक्स या अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी। अब अगले वीक में मैं अपनी नई वीडियो लाने वाला हूँ, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखना, जल्दी ही आएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है उस वीडियो पे, आप लोग क्या रिस्पांस देते हो। थोड़ा सा रिस्पांस कम मिल रहा है इस वजह से। amazing that we're still seeing this partial eclipse. Absolutely, and I think I can see a sunspot in there too, and I think on one of the earlier shots I could see a prominence. So we're seeing NASA's sun science happening in real time. So we're getting some amazing questions online. Shall we ask some more? Yeah, let's get into it. Answer some more. Okay, so we have a question from Peter Chang on X, and they ask, can filtered telescopes see flares on the sun during totality? Oh, that's a really good question. The answer is yes. It depends on what filter, though. So if you use just a white light filter, then you have to have an exceptionally large flare in order to be able to see it. If you use a filter like an H-alpha filter that specifically selects one color of red light, then you're going फ़िलहाल अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, ठीक है, तो अभी मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा 12th एंड हो चुका है। हाँ, बिल्कुल, मूवीज क्राउड ने बिल्कुल सही कहा। X asks, if a solar system had more than one star, would they have more solar eclipses? Would they all look like the same eclipses that we have here on Earth? Ooh, that is getting a little sci-fi, but that's okay. So if we had more than one sun, you'd have to have a moon to block both suns, or maybe two moons to block both suns. So you'd have to have a very complex geometry to get everything lined up perfectly so you could get solar eclipses with two suns and two moons, and oh, it would get very complicated. Thank you so much, Michael. You're welcome. Okay, so now we're joined with NASA's heliophysics lead
Denise Hill, who's going to tell us more about how you can participate in the Heliophysics Big Year. Hi, Denise. How are you today? Great. Did you see that? क्या हो गया एस्ट्रोहैन, क्या हुआ? Okay. Heliophysics Big Year. So, as you've heard before, the sun touches everything. And the Heliophysics Big Year is a celebration. You say it, Michael. It's about the community and being communal and just the unity of hearing everybody cheer. The sun touches us all in. अभी जो फिलहाल फेस चल रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे जिस भी लोकेशन से, अभी मैं उसका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, बट हाँ जिस भी लोकेशन से है ये लाइव व्यू है, आपको देखने को मिल रहा होगा सोलर एक्लिप्स का, जो कि एंड होने वाला है कुछ ही देर में। और मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे के आसपास अच्छा मतलब ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है ख़त्म होने में। अभी से आप लोग टाइमर सेट कर लीजिए, मेरे ख्याल से 12 बजे के आसपास ख़त्म हो जाएगा ये एक्लिप्स। During that time, we have themes for on different ways people can explore the sun and how it touches them. So we have themes like fashion. We're going to be delving into physical and mental and. अच्छा भाई कोई बात नहीं, रहने दो, आईएसएस से रिलेटेड मुझे कोई बात ही नहीं करनी अभी, तो आईएसएस को छोड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू भाई, लेकिन आईएसएस को रहने दो, आईएसएस को छोड़ते हैं, ठीक है। That maybe people could get involved with themselves? Yeah, for sure. So we've talked about citizen science a bunch, and that is one of the ways for sure for people to get involved and to do NASA science with real scientists. And then there's also, like, you are a scientist. Every single one of us is a scientist. And we're going to share ways that you can explore the sun, do your own little scientific investigations yourself. And so, yeah, the science is going to be front and center. There's also यस उस वीडियो को लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी अभी, तो इस वजह से मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल अब यहाँ पे एंड होने वाला है हमारा सोलर एक्लिप्स, तो ठीक है कोई बात नहीं, एंड हो ही चुका है और मैंने ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन भी आंसर कर दिया है, तो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। और अब यहाँ पर सोलर एक्लिप्स एंड होने वाला है, तो अब मैं लाइव बंद करने वाला हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मेरे लाइव में मेरे साथ कनेक्ट हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो चलता हूँ मैं, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल टीज़र आने वाला है। आप लोग टीज़र को ज़रूर देखिएगा, टीज़र थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो का आप लोग वेट करिए, वीडियो नेक्स्ट वीक आएगी। फ़िलहाल मैं कल टीज़र डालने वाला हूँ अपने अपकमिंग वीडियो का, तो आप लोग उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।